But today we are once again pained to say that very recently we heard Prime Minister Modi giving yet another sermon to the nation that when two citizens exchange gifts, that instead of flowers, we should exchange a copy of the Constitution. I imagine when the Prime Minister of India gives a statement like that, the message to the nation is he has every intention to uphold those constitutional provisions. But what comes as a rude shock is that last night in the Union Territory of Puducherry, we have seen that the Lieutenant Governor Kiran Bedi ji has unilaterally appointed 3 MLAs to the Assembly. Their names are Shri V. Saminathan, who happens to be the President of the State Unit in Puducherry of Bharatiya Janata Party. The second person who is also nominated by the Lieutenant Governor is Shri K. G. Shankar, who is the BJP Treasurer of the State BJP Unit in Puducherry. And thirdly, one Shri Selva Ganapathy, who is openly known as a member of the RSS cadre. Now, the question is that over the past many years, it has been the constitutional practice and precedent that whenever a member is elected under this provision, nominated, not elected, nominated under this provision of the 1963 Act, which is known as the Government Union Territory Act, under which there are rules of business of the government of Puducherry, which are by virtue of section 46 of the main act. It has been seen that a Lieutenant Governor generally acts on the advice of the Council of Ministers. We are all aware that in Puducherry, we have a government with a proper mandate. We have a legitimate government functioning there. But it is shocking that a Lieutenant Governor, without any consultation with a legitimately elected government, should go ahead in cahoots with the Government of India and appoint 3 members to the Legislative Assembly, and 3 members who are blatantly being selected with a view to support the Bharatiya Janata Party. They are post holders in the state unit, and the third is an open RSS cadre. The question that comes to mind is a Prime Minister who talks of upholding the Constitution should be answering to the nation that what is the reason that the wish and the advice of the Council of Ministers should be overruled by a Lieutenant Governor, and it is suspect and it is blasphemous, more so because it has become a trend in this country since the NDA has formed government at the center. We have seen how government after government has been toppled and President's rule has been imposed, whether it is Arunachal. We have seen the recent Manipur and Goa elections, that despite the fact that it was not the BJP and the Congress which emerged as the single largest party, they were not invited by the governor's office. We believe this is the sheer hypocrisy. It is the sheer hypocrisy of the Prime Minister of India, who at every step talks about upholding the Constitution, but he is very much a party to it. His party, Bharatiya Janata Party, is very much a party to
consistent violation of the Constitution of India. We saw also what happened in Uttarakhand with Harish Rawat ji. Today we would like to condemn this act of the Lieutenant Governor of Puducherry and remind her that she holds a constitutional post, to remind her that as the Lieutenant Governor of a union territory, she also swears by her duty to protect and uphold the Constitution, and she has blatantly violated a well-set precedent in constitutional practice of consulting an elected government. And we would like to bring it to the attention of my friends in the media that Honorable Chief Minister of Puducherry has written to the Prime Minister reminding him that a government which talks consistently of cooperative federalism has today shown complete and sheer disregard and insulted elected government. We have filed a petition in the High Court, which is due to come up on 5th of that is tomorrow, due to come up in the High Court, and I hope that the Honorable Court will uphold the long-standing practice and procedure which previous governments have followed. There have been some gaps where no MLAs had been selected, but whenever they have been selected and sent to the assembly, it has been seen in the past, it has been with due consultation with the elected government. हमने कुछ दिन पहले ही ये सुना और देखा कि देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से कह रहे थे कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को हम कोई गिफ्ट देते हैं तो फूल ना देकर या कोई और चीज़ को ना देकर हम एक दूसरे को संविधान की एक कॉपी उपहार में दें। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में या अपने बयानबाजी में हमेशा संविधान की सम्मान की बात करते हैं, पर कल रात को जो पुडुचेरी में हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमती किरण बेदी जी जो पुडुचेरी में हैं, उन्होंने कल रात को पुडुचेरी असेंबली में 3 MLAs को उन्होंने नॉमिनेट किया। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिनका सिलेक्शन उन्होंने किया, जिनका उन्होंने शपथ कराया, तीनों ही भाजपा के पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं। जिनको पहले उन्होंने सिलेक्ट किया वो भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं। दूसरे जो विधायक हैं वो बीजेपी के स्टेट पुडुचेरी यूनिट के ट्रेजरर हैं। और जो तीसरे हैं, ये सबको वहाँ मालूम है कि वो आरएसएस के कैडर है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को ये सवाल करते हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पोस्ट होता है, हम कहेंगे कि वह राज्य सरकार का रक्षक होते हैं। वो संविधान की रक्षा करने के लिए गवर्नर्स को बिठाया जाता है राज्य सरकारों में। हमने देखा है कि जिस तरह से पुडुचेरी की सरकार को हाल ही में जो जीत के आए हैं या उनके मंत्रिमंडल से बिना किसी आलोचना के, बिना किसी डिस्कशन के उन्होंने ये सिलेक्शन किया है, मैं कहूँगी ये संविधान का अपमान है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि विधानसभा में जो 3 MLAs का सिलेक्शन होता है, हमेशा मुख्यमंत्री के साथ डिस्कशन के बाद होता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आज ही हमने न्यूज़ में देखा है कि वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन पे धमकाया है। किस लिए धमकाया है? क्योंकि किसी एक घटना की वजह से पश्चिम बंगाल के पुलिस फोर्स ने कानून को सामने रख के जो एक्शन लिया था, उसके बारे में वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने एक मुख्यमंत्री को धमकाया।
मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी सरकार गठन होने के बाद जितने भी राज्यपालों के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनका आज तक क्या आचरण रहा है। हमने अरुणाचल में देखा है, उत्तराखंड में देखा है, हाल ही में हमने मणिपुर और गोवा में देखा है कि जो राज्यपाल का पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, क्योंकि परंतु उसका व्यवहार, मैं कहूँगी दुरुपयोग, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं कहूँगी कि इस तरह से कर रही है कि मैं कहूँगी कि भारतवर्ष के इतिहास में संविधान का अपमान मुझे नहीं लगता कभी इस तरह से किया गया है। हम कांग्रेस की तरफ से उसको कंडेम करते हैं। हमारे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर इस बात के बारे में उनको अवगत कराया है और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो यूनियन टेरिटरी एक्ट है 1963 की, या जो बिजनेस रूल्स है पुडुचेरी गवर्नमेंट को चलाने की, उसको देखते हुए इन 3 अपॉइंटमेंट्स को हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट खारिज करेगी। क्या हमारा समर्थन है? कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। सवाल ये उठता है, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से मोदी सरकार के टेन्योर में जिन राज्यपालों को बिठाया गया है विभिन्न राज्यों में, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के बावजूद भी उनका जो व्यवहार रहा है राज्य सरकार के प्रति, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, उत्तराखंड में हो, मणिपुर में है, गोवा में हो, हम ये सोचते हैं कि a governor or a lieutenant governor who holds a constitutional post has no right to continue unless they are in a position to stand by their oath, unless they are in a position to uphold the constitution। और एक गवर्नर, एक राज्यपाल, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को धमकाए, मैं कहूँगी ये सरासर ये गलत है। और इस राज्यपाल को मैं कहूँगी रिज़ाइन नहीं, रिकॉल करना चाहिए उनको। he should be sacked according to me, and I feel no governor has the right to reprimand any elected chief minister. That is not the scheme of our constitution। मैं ये कहूँगी कि किरण बेदी जी ने जिस तरह से इन सिलेक्शंस को किया है, एक इलेक्टेड सरकार से किसी तरह के डिस्कशन नहीं करके, किरण बेदी जी शुड बी सैक्ड and the government should recommend that she be removed on this ground। I don't think she has the moral right to continue। And I am repeatedly saying this is not how the Constitution of India envisages a relationship between a governor, lieutenant governor and an elected government। The government and the president, I hope, will take due note of this, and she should be removed by the government rather than asking for her resignation। प्लीज़ आप बात को समझिए। हाँ, व्हाट? थोड़ा लेट आया था। अच्छा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आपका सवाल मैं कहूँगी बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए है क्योंकि आप जो कह रहे हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज जब भारत सरकार की मंत्रिमंडल जब बैठती है तो देश के राष्ट्रपति उनका शपथ लेते हैं और उनको बिठाते हैं। वो राष्ट्रपति जी का अधिकार है, संविधान में है। पर हमारे संविधान में ये है
कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो चुनाव जीत के आते हैं और सरकार का गठन करते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी होती है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है औरों से, ये संविधान में जो स्कीम है उसमें राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं अगर आप देखें, पर क्या देश के राष्ट्रपति आज मंत्रियों को अपॉइंट कर सकते हैं प्रधानमंत्री से बिना पूछे? It says as per the business rules. मैं आपको जब प्रेस रिलीज दूंगी, जब हम आपको प्रेस मीट की कॉपी देंगे, उसमें हमने कौन से बिजनेस रूल्स के बारे में कहा है, आप उसको पढ़िए। और मैं आशा करती हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं ये सवाल ज़रूर हाई कोर्ट में उठ के आएगा, और मेरा विश्वास है कि न्यायालय में इसका विचार होगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या अधिकार होते हैं, और मैं कहूँगी कि गवर्नर का कितना अधिकार होता है, क्योंकि संविधान कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें प्रैक्टिसेस भी है, प्रेसिडेंट्स भी है, सबको देखा जाएगा। और उन प्रेसिडेंट्स और प्रैक्टिस के बारे में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जी ने अपने चिट्ठी में जो प्रधानमंत्री जी को लिखा है, वो सारा रिकॉर्ड दिया हुआ है कि पिछले 10 साल में, 15 साल में कैसे किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि न्यायालय में इसका सही विचार होगा। I don't know of a single instance where the Congress as a party has ever condoned any constitutional provisions being flouted. We may have questioned the allegations of a party and the motives behind those allegations, but I find it extremely hard to believe that Congress as a party has ever condoned any violation of the Constitution. If you do have an instance, do point it out in your newspaper. I'm sure a retort will come. But prima facie, I refused, I cannot accede to that. But yes, many times we have questioned the motive of many political parties and their allegations and the veracity of it. There is no doubt about that. हिंदी ते बोलबो ना कि इंग्लिश because Bengali paper na that's why. She also wants to add. Yeah. सीएम को क्या प्रेसिडेंट Against the governor's conduct. आपके बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र चौधरी, उन्होंने भद्र पुरुष कहा है गवर्नर को, और आप ऐसे भद्र पुरुष को हटाने की बात कर रही हैं। No, they said that he's gone to Rajnath Singh. But what he said is not aware. What? What he's saying, he's called him Bhadra Purush. It's not. It's not true? I don't know now. No, just a second. There's no confusion. Now there are 3 questions: 1, 2, and 3. So the first question that you asked me is that should she not have gone to the president instead of going to the press? And will Congress go to the president? See, first of all, what we have seen in the media is all that the Mamata Banerjee's government did is they invoked a provision of law to make some arrests. Correct? That is her duty as a chief minister, and that is the duty of the police to have done it. Today, if a governor has picked up the phone and has reprimanded her as per her statement, she has every right to go to the president, which she has.
Now you are saying that why did she go to the press? I don't think we have the right to question a public figure on why she's addressing a press on that issue. I mean, I don't understand why this question should come up in the first place. You expect us to keep it confidential. But I counter ask you that repeatedly in different states, including West Bengal in the past, and Uttarakhand, and Manipur, and Arunachal, when we have repeatedly raised the question of the integrity of people holding constitutional posts, has this party taken any action? Has the government paid any heed to it? So, media is one of the strongest pillars of the democracy. And there is no reason why we should not turn to the media to highlight what is happening. It is also one of the pillars of democracy, like you say, and there is no bar, there is no ban, there is no code of conduct that bars any chief minister from raising it in the media. What did you ask? BCC or PCC? Said. See, Adhir Ranjan Da has said, according to you, I have not heard it, that a governor's post is respectable and that Chief Minister of West Bengal should not have given a comment. I will say that Adhir Ranjan Da has said this which is nothing different from what the Congress is saying. We have repeatedly said that a governor in a constitutional post cannot flout the constitution. If you were to ask Honorable PCC President Adhir Ranjan Chaudhary ji that should a governor have been allowed to reprimand the Chief Minister of any state, I am sure that Adhir Da would agree with what we are saying. And if he has said that the Lieutenant Governor is Bhadralok, I don't know. I mean, our friend here has said, Vikranji has said that. I don't know under which circumstances he has said it, but the governor, to be fair to Adhir Da, if Congress state president or Congress workers are today at the receiving end of any law and order situation, even Congress will have to go to the governor against the government of that state. So it is the governor who protects the chief minister against any kind of I would say any kind of violation of the constitution, and equally Adhir Da also has the right to seek the protection of the governor if there is any injustice against him in the state. But the question is that is the governor fulfilling his duties in reprimanding a chief minister? That's not the vision of our constitution. Somebody else. It is a well-known fact that law and order is a state subject. Whatever communal tensions has happened, first of all, there are some papers saying there is no, I don't know which particular case you're talking about, because there are problems happening in Darjeeling also. So I would say that we definitely expect a chief minister of a state, that when it comes to the law and order of a state, there is no doubt that it is the responsibility of the chief minister to maintain it. But if you want to talk about failures of chief ministers when it comes to law and order, I don't think Mamata ji can be single-handedly targeted in that. We can start from Jammu and Kashmir and go to many other states. But yes, we do not deny that law and order is definitely a state subject. And if Mamata ji in her wisdom has asked the central government to help, we expect that the central government will rise above partisan politics and step in to assist her. So, I mean, I don't think I have anything further to say on that.
क्योंकि एक केस ऐसा हुआ है बिहार में जी रमा जॉर्ज गवर्नर इसमें लिखा है। गवर्नर एड्रेस के लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से मांगा था, लेकिन वो नहीं आए तो उन्होंने अपनी तरफ से गवर्नर एड्रेस किया। They had to give the names. Who had to give? The council of ministers. I am not clear on whether even she consulted the chief. That's आप यही पूछ रहे हैं कि सीएम पुडुचेरी से मांगा था, नहीं दिया, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? To the best of my knowledge, that whatever has happened without his knowledge. Whether Chief Minister Puducherry actually recommended names and it was rejected or not, I'll have to seek instructions. It's a pertinent question, so I can tell you in the next couple of minutes. अरे मेरी फ्लाइट निकल जाएगी. Last question. Lawyers can be. Powers come back. मैंने ये जो आप जिस संशोधन की बात कर रहे हैं, मैंने उसको पढ़ा नहीं, पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर जो प्रैक्टिस है, हम रिटायर्ड जजेस को एनजीटी में बिठाते हैं या किसी और ट्राइब्यूनल में बिठाते हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंस की वजह से, कि उनका 10-20 साल का तजुर्बा होता है एज इन गिविंग जजमेंट्स. तो अगर किसी वकील को बिठाने के कोई फैसला हुआ है सरकार का, मैंने देखा नहीं है, मैं यही कहूँगी कि उसकी क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या उस लॉयर का उस एरिया में एक्सपर्टीज़ है, कितने साल का प्रैक्टिस है. अगर ये सब नहीं देख के ये किया गया है, मैं कहूँगी कि ये गलत है. अगर आप किसी वकील को बैठने का मौका देंगे एनजीटी ट्राइब्यूनल में तो उनके तजुर्बे पर निर्भर करता है. और मैं ये कहूँगी कि ये सरकार शुरू से एनजीटी को डाइल्यूट करने के, मैं करूँगी, बहुत काम कर चुकी है. आपने देखा है सुब्रमण्यम कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, एनवायरमेंटल लॉज को तैयार करने में हमको सालों लगे हैं और 14 कानून को एक कमेटी ने कुछ महीनों में उनमें संशोधन करके कई तो खारिज कर दिए. मैं एनवायरमेंट कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ और जब अश्विनी कुमार जी उसके चेयरमैन थे, स्टैंडिंग कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट लोकसभा में टेबल किया है. इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट किया है. और उसमें एक कारण ये था, एक ऑब्जर्वेशन ये था कि यह सरकार एनवायरमेंटल लॉज को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे. और मैं कहूँगी अगर एनजीटी में बिना किसी कंडीशंस को वकील की अपॉइंटमेंट की कोई ऐसा फैसला हुआ है और अगर सही क्राइटेरियाज नहीं है, मैं कहूँगी ये एक और तरीका होगा एनजीटी को डाइल्यूट करने के लिए. और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है. I believe Anand Sharma ji has given a detailed statement on it, hasn't he, to ANI? He's spoken to ANI. Well, I did see this news running earlier today, and I haven't had the opportunity to seek instructions on it from our senior leaders, so I wouldn't like to comment on it. But I'm sure by tomorrow the picture will evolve and you will be briefed. On China, Supriya, I have seen in the last couple of PCs, Dr. Singhvi has addressed on India-China. I believe Mr. Anand Sharma ji has also spoken, and I think Congress's stand is amply clear, and the threat, as is being reported by the media, that has come from China, I think it is alarming. I think it is definitely alarming, and we have repeatedly said
that India needs to contain the situation when it comes to what is happening at the border. We stand by that, and it is also important to reiterate that when it comes to matters of national security and I will say sovereignty of this country, we have always stood by the army. We have stood by army action which has been taken in the greater national interest, and we only hope that the government of the day is astute enough to take appropriate action to contain the situation. I don't think at this point anything further needs to be said. That's it. Thank you so much.